So the journey of this channel started when the market was crashing and everything was falling 50-60%. The sky was red and people were panicking like nothing before. There were deaths due to COVID and nobody knew how to protect themselves and their loved ones. And that was the time when I saw it perfect to start this channel and make a new portfolio. Since then I have added many lakhs and my portfolio has gone from 50% down to above 85% in profit right now. इस प्रोसेस में मैंने कुछ नई कंपनीज के शेयर खरीदे और बहुत ही थोड़े शेयर्स बेचे हैं। जैसा कि मैं बोलते आया हूँ कि मैं सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए शेयर नहीं बेचता हूँ। I sell only when I feel that my idea of that share has started to go wrong or the story of the company for which I bought it has come to an end. और ये सब रजिस्टर्ड है मेरे वीडियोस में अभी तक, जो आप वापस जाके भी देख सकते हैं। जैसा कि जब मैंने बटरफ्लाई गंधीमती का शेयर खरीदा था तब मैंने बोला था कि ये फास्ट ग्रोइंग स्टॉक होगा मेरे पोर्टफोलियो का, लेकिन जब ये गिरेगा तो भी बहुत तेजी से गिरेगा। आज इस शेयर ने मेरे पैसे 5 टाइम्स बढ़ा दिए हैं। सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक दैट आई बॉट इन दिस पोर्टफोलियो। आई टोल्ड यू ऑल, इस प्रोसेस में कुछ ही बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई शेयर बेचा हो और आज ऐसा ही एक दिन है। Yes, I sold out of one of the stock. I have been carrying this stock for almost 1.5 years and it felt like the right time to sell it off. So today in this episode we're gonna discuss that stock और मैं बताऊंगा अपना रीजन इसे बेचने का और मैं क्या करने वाला हूँ उस प्रॉफिट से जो मुझे मिला है शेयर को बेच के। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, I have a small clip for you. Now I hope you have smashed the like button already. When you smash it, then YouTube shows this video to more and more people and our small channel get more views and I don't feel like I'm talking to myself here, which is by the way all the time. So please smash and share the video with your friends. So this is my portfolio and you have been seeing these companies from some time now. But in recent times, as you all know, I have hit kind of a roadblock. Because of COVID, my business got hit a lot and it's still recovering from it. So the cash has become a problem now. But जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ नए इन्वेस्टमेंट, कुछ नए स्टॉक चूज किए हैं खरीदने के लिए, तो मुझे ऑफ कोर्स कैश की जरूरत है और इसलिए मुझे चूज करना होगा मेरा लीस्ट फेवरेट स्टॉक सेल करने के लिए। एंड दैट्स वेयर आई टेल यू गाइस द नेम ऑफ दैट स्टॉक. So the stock that I'm selling completely from my portfolio is Repco Home Finance. This company works in providing loans for houses of 15 to 25 lakhs. इसका main customer base divided है 50-50 between salaried clients and non-salaried clients. और इस फील्ड में इनके ज्यादा कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है अभी इतने बड़े लेवल तक. And this company is pretty good in its work. तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे बेच ही क्यों रहा हूँ आखिर? वेल, क्योंकि कुछ टाइम से हमें देखने को मिला है कि इन फाइनेंस कंपनीज का बोरोइंग कॉस्ट काफी हाई हो गया है, स्पेशली अगर आप इनको कंपेयर करते हैं बैंक से और बड़ी फिनटेक कंपनीज से। ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, ऐसा हमेशा से था, बट अभी गैप थोड़ा और बढ़ गया है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी फाइनेंस कंपनी की सक्सेस में। अब रेपको के पास तो खुद इतने रुपए होते नहीं है कि वो इसी से काम चला लें, या किसी भी दूसरी फाइनेंस कंपनी की अगर हम बात कर लें तो ये पूरा बिजनेस ही बोरोइंग पे चलता है। कंपनी पैसे बोरो करती है मार्केट से, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स या दूसरे बैंक से, और फिर उन पैसों से हमारे जैसे क्लाइंट्स को लोन देती है। तो अगर उनका खुद का बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट रेट 6% है तो वो हमको लोन 8% पे देते हैं और बीच का 2% ये कंपनी खुद के लिए रख लेती है। बट अगर एक कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट 5% है और दूसरी कंपनी का कॉस्ट 7% है तो ऑफ कोर्स पहली कंपनी अपने क्लाइंट्स को लोन भी चीपर इंटरेस्ट पे दे पाती है, तो फिर कोई दूसरी कंपनी से हायर इंटरेस्ट पे लोन लेगा ही क्यों? बट लोग लेते हैं बिकॉज ऑफ बैड क्रेडिट स्कोर। तो अगर हम रेपको की बात करते हैं तो रेपको का बोरोइंग कॉस्ट इस टाइम पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इनके डिफरेंट मेथड्स हैं पैसे बोरो करने के लिए। ये 2019 और 2020 के फिगर्स हैं। यहाँ पे इनके इंटरेस्ट के चार्ज इन बिटवीन 6.10 टू 8.20% तक हैं। इसलिए रेपको अपने क्लाइंट्स को लोन 9.5% पे देती है। वहीं आप अगर बाकी बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज को देखेंगे तो चीपेस्ट लोन आपको करीब 6.65 पे मिल जाएगा। This is all because of Repco's expensive borrowing cost, which they have to forward to their clients. But it has been like this from long time. But because earlier the big banks were not in deep villages and small towns of India, so the people there relied on either local lender or company like Repco Home Finance. Even if these people tried going to far away big banks and try getting loan, then also these banks wouldn't service these people because of lack of good credit score and tiny loan sum, which usually is 15 to 25 lakhs only. So that made Repco have a tiny bit of a moat in that niche.
and they have been really riding on this niche from long time now. They have always continued to improve themselves and use their money very smartly. But what is changing right now is that the small fintech companies are partnering with banks and reaching deep into the villages of countries. And as the technology is getting easier and easier, and Jio has put smartphone into many hundred of millions of people, it's just getting much easier to connect with the big banks. And in these conditions, the Repco Home Finance is gonna have hard time to go ahead and beat the competition. I'm not saying it's not a good company or the stock is not gonna go up, but it's just that the road has gotten much bumpier than before. Borrowing cost is too much, and if the NPAs, non-performing assets, just grow 2 to 3% more than usual, then it would really put a dent in its book, and I don't want to take that risk anymore, especially if I have better companies to invest in. Finance is that kind of sector only. They make money by giving people money, so it's always a risky bet to make. I still have Edelweiss as a finance company in my portfolio, and I'm planning to add 2 more banks in it. I have closed in on them already, and you will see those 2 in portfolio soon. As I said, Repco is going to still do good in future. The stock price will go up too, but the shackle on its feet in the form of borrowing cost and competition will slow its pace. That's all. There is no problem with the company. There is no issue in the way the management is handling the business, so don't worry if you are an investor in this company. It is just my preference to invest in other stock. So I sold the stock at little profit, and now I'm cash ready to invest further in my new company that I will show you guys in next episode. Remember, the infrastructure is at amazing place right now, and I'm really excited to be putting my money there. So bye bye Repco Home Finance. Sorry to quit on you. Market has been falling since last few days, and it might bring us some opportunity to buy great shares. I have some cash right now, so I would prefer it to fall further. We might continue to see small sliding for some more sessions. This is a very natural thing to happen after this big rise we have seen in last few months. This is just a cooling period, so don't panic. Invest in only companies that you understand and have trust in their management. Prices will go up and down in short term, but if the company is great, then eventually it will make you great money in long term. What I bought from last update. So in last update actually I forgot to mention that I've added 30,000 rupees worth more of shares in Lumex Industries. I have already made the whole video on this company, what it does and why am I buying the shares in it. So if you want to know more about the investment, then you can check out my video. I will keep adding this stock on each fall. They are dominant players in their sector and have the biggest automobile players as their clients from decades. So I really like the business. Again, it's a very long-term play on India's growth, the spending power and the beautiful execution of this company. Also, I've added more on my Asian Granito pile. As you can see here, I subscribed fully to my rights issue and bought 1001 shares more at the price of 100 rupees each. So I invested a little over a lakh in it. Now my total invested money in it has gone near 3.5 lakhs, so I might sold a little from it to bring it down in between 2.5 lakhs to 3 lakhs. The stock is doing quite poor, and if the management doesn't take the necessary steps sooner, investors will keep bleeding their money in this company. I still like the business, the sector they are in, and it really sets well with the infra boom of our country. Let's see what happens in the future. So business is doing good now, and I've added a couple of new clients, but I need to hire more staff. Now I have to think of how to expand further, because for that I have to hire more staff first before I acquire more clients, and that will cost me a lot of money in coming times. But as you know, money is the thing that is lacking right now, so I'm in a very weird situation. मुझे और कैश जमा करने की जरूरत है ताकि मैं और इन्वेस्ट कर सकूं, और इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं थोड़े और एक्स्ट्रा आवर्स वर्क कर सकूं. So let's see how it works in the future. Cash in hand, 1.4% of total net worth. ओह, नेटवर्थ से याद आया कि इस चैनल की नेटवर्थ बढ़ती है जब आप लाइक बटन को स्मैश करते हो, तो प्लीज मेक श्योर कि वो लाइक बटन ब्लू हो गया है. तो क्रिप्टो मार्केट में भी अभी थोड़ा सा स्टॉप आया है. बिटकॉइन 50 लाख्स का पॉइंट क्रॉस करके अभी कूलिंग पीरियड पे चल रहा है, समवेयर इन बिटवीन 48 to 49 लाख्स. अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्रिप्टो में, तो वो है रिलेटेड टू एनर्जी क्राइसिस. अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो अगर हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि 20 साल के बाद बिटकॉइन रहेगा कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स आई एम थिंकिंग इन पीरियड्स ऑफ डेकेड्स ओनली व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड ऑल दोस कॉइंस. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग कि बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है. I think in a survey they found out that Bitcoin mining is like the 6th or 7th biggest country in the form of consumption. अगर इसको हम कंट्री की फॉर्म में देखते हैं कंजम्पशन के थ्रू, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस आर skyrocketing faster day by day anyways. So not only just that, but given the lack of available energy supply, और already worldwide miners इस short electric supply के लिए compete कर रहे हैं. याद रखिए कि माइनिंग बहुत कॉस्टली है और हम बात कर रहे हैं माइनिंग फार्म्स की, जो कि एकर्स एंड एकर्स में बेस्ड होते हैं with full on temperature control and all. So you have to maintain the place and it's super expensive.
बट क्योंकि पब्लिक का परसेप्शन इनकी तरफ काफी नेगेटिव है इस टाइम पे, तो अगर एनर्जी का रेशन करने की बात आती है फ्यूचर में, क्योंकि ऑफ कोर्स एनर्जी लिमिटेड है, तो इन माइनस को एकदम लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये अभी मोस्टली। तो लॉन्ग टर्म में हमें देखना होगा कि कैसे ये माइनस क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं या कैसे ये लोगों के परसेप्शन को मैनेज करते हैं। बिकॉज इफ पीपल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स एंड इफ गवर्नमेंट स्टार्ट टेकिंग नेगेटिव स्टेप्स टुवर्ड्स माइनर्स, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिटकॉइन, जिसके लिए वो फेमस है, एज ओनली अ बंच ऑफ बिगेस्ट माइनर्स विल कैप्चर द होल मार्केट देन। अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो ये 3 लाख के ऊपर के प्राइस पे है अभी, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये और भी ऊपर जाएगा एज देयर इज न्यू अपग्रेड कमिंग फॉर इथेरियम 2.0. It is scheduled for 27 December and then it might shoot the price up. Today is 27th when I'm recording this video, so let's see what happens when it does. Today is that day. I'm recording this on 27, so let's see what happens when the upgrade comes through. So let's see. I don't want to go deep into what this upgrade is and confuse you all, but this will surely be helpful to Ethereum. And it looks like that this bull market for Ethereum is definitely going to continue. The crypto market winds are blowing in the right direction too as Bitcoin dominance declines. This means money is moving into altcoins, and that means ये perfect time है आपको altcoin से exit करने का. Especially अगर आपके पास कोई shit coin है जिन्हें आप बेचना चाहते हो, तो आने वाले कुछ वीक्स में आपके पास एक चांस आएगा इसको हाई प्रॉफिट में बेचने के लिए, ओनली अगर आपको लगता है कि वो कॉइन शिट कॉइन है. दैट मीन्स इट्स रियली रियली बैड. Of course, I'm not gonna name anything. When it comes to exchange balances of Bitcoin, these have been dropping like a rock despite the new all-time highs we saw last week. What this means is that people aren't selling the new highs, they are hodling. This shows the maturity of the asset class and the investors within. This helps in stabilizing the price of Bitcoin also and volatility decreases. मतलब जो भी होती थी पहले अब उतनी तो नहीं दिख रही है इस टाइम पे. अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है बिटकॉइन की, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस सडनली बढ़ा है, वो है ETF का आना. It is doubtlessly a watershed moment for Bitcoin, and it's my hope that it will supercharge adoption in the years to come. Buying and holding Bitcoin has become so much easier now and safer because of these ETFs, and this will surely bring more new investors who are not very tech savvy or maybe are from older generation, because पहले इन लोगों का participation थोड़ा कम था. Call me crazy, but I see a massive bull flag for Bitcoin. If my measurements are correct, we could hit 75 lakhs by the end of this year. There is no guarantee this will happen, of course, but the chances are looking pretty good, especially with the approval of those Bitcoin ETFs. More institutions like banks, hedge funds, mutual funds are focusing on buying into Bitcoin because they are also feeling that Bitcoin is the best option to save their investors from inflation and excessive money printing that has happened in the world last year due to COVID. We are still at the initial stages of adoption and there is still billions of dollars waiting to be deployed in Bitcoin. Just imagine कि क्या होगा जब पेंशन फंड्स इसमें इन्वेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन्फ्लेशन से उन्हीं को है, और कुछ पेंशन फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है. In Virginia, a couple of pension funds have been investing in crypto funds. These include funds such as Morgan Creek Asset Management, Blockchain Capital and Parataxis Capital Management, और भी कुछ सारे. Canada's second largest pension fund, CDPQ, जो कि हमारी एडलवाइस कंपनी में भी इन्वेस्टर है, they recently funded the Celsius, जो कि एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है. और ऐसे काफी पेंशन फंड्स हैं जो कि इसमें और आने वाले हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब $35 ट्रिलियन के आसपास हैं. जस्ट इमेजिन $35 ट्रिलियन. अगर इसका 3% भी बिटकॉइन में आ गया तो बिटकॉइन डेफिनेटली क्रेजी रन पे चला जाएगा, स्पेशली जब रिटेल इन्वेस्टर्स हॉडलर्स बन गए हैं. फॉर सम रीजन आई स्टिल फाइंड इट फनी व्हेन आई टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ अ क्रिप्टो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी न्यू इन्वेस्टर्स एंड हाउ मच ऑफ न्यू मनी इज गोइंग टू बी कमिंग इनटू प्ले. इसे बोलते बोलते मुझे स्कैम जैसी फीलिंग आ जाती है. तो आई होप कि आप स्मार्ट हैं और सोच समझ के ही अपने पैसे क्रिप्टो में लगाएंगे. आप मेरे कॉइन्स यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी आपको पसंद आता है तो फिर आप जाके उसको खरीद सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके बारे में पढ़िए फर्स्ट. कीप वॉचिंग दीज वीडियोस टिल एंड एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन व्हाट इज कमिंग विद क्रिप्टो वर्ल्ड, बिकॉज इट इज वेरी exciting. As you can see, my own portfolio has gone up crazy since I started this channel, and I have been constantly seeing the upside. I'm thinking of buying more on Polkadot as they have been getting some new projects soon, so it will be very exciting to see what goes on there. अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो में तो मैंने ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमेशा की तरह, और आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं उसे. This is it for today everyone. See you next time. My Money Universe.